Welcome back. It is said that it's difficult to make your audience cry, but it's even more difficult to make them laugh without really overdoing it. आज Biz Talk में बात करेंगे with the men who have made their mark in Bollywood through their remarkable comic timing. Welcome to the show, Arshad and Baman. Thank you very much. Thank you very much. So do both of you agree that comedy करना सबसे difficult है एक actor के लिए? Would you like me to start? Please. Okay. मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है. किसी को रुलाना इतना मुश्किल नहीं होता, बट किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है. क्या है कि वो जो ओवर एक्टिंग और अंडर एक्टिंग का जो गैप है वो कॉमेडी में बहुत कम है और ड्रामा में वो थोड़ा सा ज़्यादा है. आप थोड़ा ज़्यादा रो लें तो भी बुरा नहीं लगता, आपने थोड़ा कम रो लिया तो इट्स कॉल्ड अंडर प्ले एंड यू नो सो इट ऑल वर्क्स फाइन. इट इज़ अ बिट ईजियर. कॉमेडी इज़ टायरिंग, whereas I'm not saying that it's very easy, but I mean drama or anything else. But कहीं पे अगर आप देखा जाए तो हर चीज़ में कुछ फ़र्क आता है. तो कहीं पे आई फील कॉमेडी किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है. Actually, अरशद ने जो भी कहा आई काइंड ऑफ एग्री विथ हिम, लेकिन उसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी में भी यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर. अगर पहले आप कैरेक्टर को ठीक से मतलब बिलीव करें या कहानी के साथ चलते रहे, इट्स नॉट लाइक टेलिंग अ जोक. कभी कभी टू टेल अ जोक ऑल्सो कैन बी वेरी डिफिकल्ट. कोई अच्छा मतलब SMS पे आता है जोक, कोई सुनाता है तो बेकार लगता है, दूसरा कोई सुनाता है बहुत अच्छा लगता है. इनहेरेंटली एक इंसान के पास एक कॉमिक टाइमिंग होता है नहीं होता. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉमिक टाइमिंग. कॉमेडी इज अबाउट बिलीविंग इन दैट मोमेंट. एक्टिंग इज अबाउट बिलीविंग इन दैट मोमेंट, एंड इफ यू स्टिक टू दैट यू आर फाइन. पर आप दोनों इतना एफर्टलेसली कॉमेडी कैसे करते हैं? Give us बहुत your टैलेंट है secret. हमारे पास. कितना अच्छा जोक मारा इसने. Over talent. कितनी अच्छी टाइमिंग से बोलता है. नहीं, मेरे ख्याल से हर एक्टर की हर एक्टर में कोई ना कोई चीज़ें होती जो वो बाकी चीज़ों से अच्छा करता है. बट मैं आई डोंट नो यार, मैं चाहूँगा कि लोग ये माने कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैंने किया है बाकी फिल्मों में. बट इतना ही है कि कॉमेडी ज़्यादा की है मैंने. और कॉमेडी क्या है ना कि वो कॉमेडी दिमाग में रह जाती है क्योंकि मज़ा आता है आपको देखने में, तो वो बातें रह जाती है. सो बट लेट्स से मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मैं एफर्टलेसली कॉमेडी कर लेता हूँ, तो थैंक गॉड फॉर दैट. And what about you? About me, what, darling? About how do you do it so effortlessly? As I said earlier, if you understand your character and you work on a character, तो already एक character एक अपना ऑरा लेके आता है सेट पे कि ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है और ये मतलब उसकी रिएक्शन देखने में बहुत मजा आएगा. औरों लेके आए थे. लेकिन He's just dumbfounded. He's just, औरों had to. I didn't hear what अभी हम लोग he said acting में में औरों लेके आए हम लोग थे. औरा लेके आते, हमें जी औरों लेके आते. Oh, I just got it. So Arshad, आपने अपना करियर काफ़ी कन्वेंशनली शुरू किया and then you found your calling in author-backed character roles, especially comedy. So how did the shift happen? I don't know conventionally. मैं तो बड़ा अजीब सा एक launch, but that's a long time back. How many years I ago? start 16. Yeah, 16. कॉमेडी इज वो क्या हुआ, पहली फिल्म में मैंने कॉमेडी की और उसके पहले मैंने लाइफ में कभी एक्टिंग नहीं की. अभी भी नहीं करता हूँ एक्चुअली. उसके पहले लाइफ में कभी एक्टिंग नहीं की, तो मैंने पहली फिल्म में कॉमेडी की, तो बस उसके बाद वो क्या कहते हैं वही करता गया. हो सकता है अगर मैं अपनी पहली फिल्म में कुछ ड्रामेटिक रोल करता तो शायद वही करता रहता. सो आई थिंक ऐसे ही होता है समवेयर डाउन द लाइन ना, एक आदमी टाइपकास्ट हो जाता है. तो किसी ने आपको कोई चीज़ करते हुए देखा, उनको मज़ा आया, तो बस वो चाहते हैं कि और करो और करो. तो मेरा बस वही चलता रहा. सो आई डोंट नो. Did you miss playing a hero, you know, the lead kind of roles that No, you no, no. started I don't off never with? care about that. I've never cared about और क्या फ़र्क है उन दिनों में और आज में? नहीं, आई मीन हीरो लीड का मैं कभी सोचता नहीं. मैं अच्छे स्क्रिप्ट्स का सोचता हूँ, अच्छे रोल्स का. जैसे अभी गाजियाबाद है जिसमें मैं विलन हूँ, सिंपली बिकॉज मुझे वो अच्छा लगा कि विलन का कैरेक्टर करते हैं, कहानी अच्छी है. दैट्स अबाउट इट. Also, I think आज के तारीख में the whole mindset has changed a या lot. pretty much. पहले से, right? Quite everybody does everything now. कोई इशू नहीं है. True. अच्छा है. So Baman, मैं बहुत जल्दी हीरोइन का रोल करूँगा. we would love to watch you. And please shave मत करना. Baman, आपने तो कैरेक्टर एक्टर को कैरेक्टर स्टार बना दिया. So what do you have to say about that? Really?
नहीं, you know, Yeah, okay, ask I him. think स्टार जो होता है ना, स्टार वो पब्लिक के लिए होता है. सेट पे हम एक्टर है, नौकरी करते हैं. इट्स अ जॉब लाइक एनीबडी एल्स. एक होमवर्क करना पड़ता है, प्रोजेक्ट जैसे एक प्रोजेक्ट होता है. तो आई डोंट नो अबाउट दिस स्टार थिंग, बिकॉज अगर हम लोग मान ले कि हम स्टार है तो मुझे लगता है कि आई विल लूज समथिंग इन माई सेल्फ एज एन एक्टर, बिकॉज एवरी रोल शुड बी like a new innings, like a debut. True. If I treat it like that, I think I will do better and better as the days go by. Because I have a young career. 10 साल भी नहीं हुए मुझे. Exactly, तो yeah. मुझे बहुत करना है. टाइम मतलब He's a newcomer like Anil Kapoor. अनिल कपूर, yeah. We enjoy what we do. The moment we start believing in all this whole thing that, you know, people. But why did you start your career so late in your life? I was busy being a photographer. और आप थिएटर भी करते थे. थिएटर भी साथ साथ करता था, बट दैट वाज, यू नो, ओवर द वीकेंड्स. और फोटोग्राफी करते रहता था. मैं 32 साल का था जब मैं फोटोग्राफर बना. इट वाज लिटिल लेट इन लाइफ. उसके पहले मैं दुकानदार था, आपको शायद मालूम. उसके पहले मैं वेटर था. तो मतलब मुझे एक्टिंग का मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूंगा. थिएटर करने लगा. अरशद वाज माय फर्स्ट प्ले. ही वाज माय कोरियोग्राफर इन द फर्स्ट प्ले. और बहुत कुछ सीखने को मिला हर्षद से उस वक्त. और उसी वक्त So it was a musical play? इट वाज अ म्यूजिक प्ले. एंड हर्षद को उसी दौरान उसे तेरे मेरे सपने का वेरी नाइस. अजीब वक्त था वो, बहुत मजेदार था वो एक्चुअली. तो आई स्टार्टेड लेट. फिर फोटोग्राफी किया. फिर मैंने सोचा अगर फोटोग्राफी छोड़ के मैं उधर भाग जाऊं तो मैंने जितनी मेहनत की फोटोग्राफर बनने को, एक नाम कमाने के लिए, वो सब गवा दूंगा मैं. तो जब मुन्ना भाई MBBS का जब ऑफर आया तो उन्होंने कहा 14 दिन का काम है, 14 दिन के छुट्टी ले लो और फिर आप वापस आपके फोटोग्राफी स्टूडियो पे चले जाना. आज तक छुट्टी ले रहा है. इसने हमारी छुट्टी कर दी. सच मुझे इट वर्कड आउट लाइक दैट. So you actually never planned to become an actor? नो, आई जस्ट डिड मुन्ना भाई. 14 दिन निकाले, मैंने किया, बहुत मजा आया. घर पे आया, फिर लोग फोन कर रहे हैं. मैंने फोन क्यों कर रहे हैं? पिक्चर तो रिलीज भी नहीं हुई थी तब. Right. पीपल गेट टू नो, यू नो. Yeah, absolutely. And then the rest, I am very grateful. Yeah. So were you disappointed when your first solo lead film, Shireen Farhad, didn't do that well at the box Who office? said it didn't do well? It did fantastically. It didn't do well. that well, I said. Ah, अच्छा, okay. It did well for sure, but I just said No, that. it It could have done. It could have done much better. Something was missing, but there were some wonderful moments in it. I enjoyed working on the film. I enjoyed watching the film also, and audiences enjoyed it too. But sometimes it does lose its way, and it did lose its way. Right. It didn't hit the mark. It did not grab the audiences, and they didn't take a fancy to it, which is unexplainable, which is Yeah. fine. There were things that in the film that may not have worked. Some of the comedy worked, some of the scenes worked, but in totality, some people liked it, some people found it disappointing. They may have been expecting a lot more, which is fine. I'm not disappointed at all. And if you take these things to heart, then you will run yourself down. Right, absolutely. Yeah, you go on. I enjoyed the experience. I हर think इंसान Farah- का एक opinion होता है. yeah. So, No, it's not, and the opinion has to be respected. See, when people review, it is an opinion. When an audience rejects, it is very, very important that you take it seriously. Right, absolutely. So Johnny LLB, sorry, one minute. So Jolly LLB sounds uncannily similar to Munna Bhai MBBS. तो क्या कोई सिमिलैरिटी है? कहीं दूसरे शहर में जाके पिक्चर बनाए. शहर ने देश में देश. Maybe Uzbekistan. Uzbekistan. I don't think there was Munna Bhai there. No, there's no Munna. They don't know about. yeah. Then there was. There's You some think Ukraine में होगा? No. There's no So, MBBS only. so in has that country. everybody, like almost Can everybody we- asked you the same question? I think we should probably, I don't know. Where did they- Siberia. Does Siberia. Macarena कौन से country में होगा? Where was Okay, let me Macarena? rephrase the हाँ जी, question. No, sorry. No. How did you kidding. How? Okay, So there's why no does similarity. Jolly LLB sound so different to Munna Bhai MBBS? No, okay, it's see, you're right, because it's MBBS, it's LLB, it is Arshad, Munna Bhai, it is Actually. Jolly, it is Baman and Arshad, Baman and Arshad. So yes, there is a little, you bound to think like that. But ऐसा नहीं है, फिल्म बिल्कुल अलग है, इनमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है. एक ही चीज़ कॉमन है इसमें, जो है हम दो चीज़ कॉमन है, हम दोनों, इसके अलावा और कुछ नहीं है. ये अपनी आपकी एक फिल्म है लॉ के ऊपर, तो बिल्कुल ही अलग है. So are you both expecting it to be a bigger hit than Munna Bhai MBBS?
We didn't expect Munna Bhai in BS to be a big hit. What are you saying? Because it was not a big hit when it opened. On the first 2 days, nobody wanted to go and watch Munna Bhai BBS. Actually, I was shocked when it लेकिन जब आप died because I had full faith. I used to tell Sanju throughout the shooting. I said, Sanju said, really good film, really good film. I had a lot of faith in the film because when I heard the script, I thought ये बहुत ही प्यारी कहानी है. And जब I think first day only by the last show it picked up. लेकिन उसके पहले जब open इतना खराब हुआ और खाली मैं बोला अरे ये क्या हो गया ना. मैं गया था थिएटर में एक्चुअली. मैं बोला खाली थे. राजू बोल रहा है कि was watching it. मैं गया थिएटर में. राजू तू इतना खुश क्यों है? थिएटर तो खाली है. 30% भी कोई बैठा नहीं. वो that was much before the multiplex generation in that sense. मतलब I'm talking about single screens में. इससे बाद बमन कोई फर्क नहीं पड़ता. सी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे ऐसा हंस रहे, ऐसा रो रहे, इतना कूद के enjoying themselves. इतना काफी है हमारे लिए. फिर हिट फ्लॉप हमारे हाथ में नहीं. फिर रात को थोड़ा पिकअप होगा. और ब्लैक मार्केटियर लेडी वन ब्लैक मार्केटियर लेडी सेड हाँ ये बहुत दिन के बाद हम कमाएंगे. ऐसे सचमुच हाँ मैं बोलती हूँ बहुत कमाएंगे हम लोग इस पिक्चर पे. मतलब चलो अच्छी बात. Night was packed. Jolly has that flavor. I mean, I would say it is somewhere. Let's put it this way: a film ना जो होती है वो अक्सर एक डायरेक्टर की सेंसिबिलिटी होती है. और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि राजू में और सुभाष में खास फर्क नहीं है. वो दोनों लेट्स से पहली बात तो ये है कि आप उन्हें खरीद नहीं सकते. इन अ सेंस कि वो एक फिल्म बनाने के बाद ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि आप मैं 10 करोड़ देता हूँ मेरे लिए फिल्म करूँ. वो नहीं करेंगे. ये बड़े ढीठ किस्म के डायरेक्टर है. जब तक उनके पास एक अच्छी कहानी नहीं होगी वो नहीं करेंगे. हम जैसे हम लोग शूटिंग के वक्त जब तक सही टेक नहीं मिलता वो रुकते नहीं है. उनका चलता रहता है रीटेक जब तक वो खुश नहीं होते. राजू भी ऐसे ही ये भी है. तो कहीं पे मुझे इनकी सोच भी एक जैसी है. एक मैसेज है थोड़ा सा वो सोशल मैसेज है. ह्यूमर आ जाता है साथ में. बट जिंदगी की बात कहते हैं. दे टॉक अबाउट रियल पीपल. तो ये आई फील कितनी बड़ी होगी मैं नहीं जानता पर मुझे इतना यकीन है कि जॉली लोगों को बहुत पसंद आएगी. Right. And did you guys have any I'm sorry, one minute. Did you guys have any funny moment in the sets? मतलब especially prank के बारे में बात करें. He's a serious guy. Yeah, I I'm could a see very that. serious guy. We sit in a corner में मेरा लाइंस करते रहता हूँ. वो अपने कॉर्नर में बैठता अपने लाइंस करते रहते. हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते सेट पे. साइलेंस रखते. कोई भी सेट पे बात करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल है ना. हाँ. So do you guys get हम लोग along एक्चुअली well? हम लोग को एक्चुअली खामोशी में कास्ट करने वाले थे लेकिन नहीं लिया. हम लोग बहुत सीरियस रहते सेट पे. हम लोग एक के साथ बात नहीं करते. डायरेक्टर आया तो हम लोग ऐसे देखेंगे. okay. हम लोग किसी के साथ बात नहीं करते और वो इसलिए क्योंकि हम उनके साथ बात करना नहीं चाहते. तो ये चलते रहता है. और भाई एक set दूसरे पे. से भी नहीं. चलते रहता है ऐसे सेट पे. मैं किसी से बात नहीं करना चाहता. Till the camera doesn't start. मतलब वो क्लैपर आके वो ऐसे तब तक ऐसा चलता रहता है. Look at the director कि इन लोग चुप होगे तो मैं clap करूंगा. मैं क्या करूँ. अरे clap दो. So this is the thing. But we are I very think serious. we've seen that happen here as well. So I think वो जब तक We need to take us seriously. Arshad. I know man. Tell everybody. We need to do some bad films. See, Oh, sorry. we are very serious actor. We don't talk much. We are very kadak. That's the way to be. I don't know if people believe that. No, they believe. But बोलने में क्या जाता है? जी आप कह रही थी. जी. Well, देखिए एक्टिंग जो है yeah, we have some बहुत ही serious. Hey, doesn't forget. not working. चलो यार. Get back. Well, 90s में हमारे comedians को एक dedicated track दिया जाता था. 90s में हमारे कॉमेडियंस को कॉमेडियन कहा जाता था. Sorry. That too. That has also changed now. But आज के तारीख में lead actors, as in mainstream actors rather, are playing similar roles. Mr. Bachchan has been doing comic roles for years. But just comic. I mean, he has been having a lot of different, scenes. He had different scenes, and comedy was one of the aspects. लेकिन आज के तारीख में actors are playing only comedy films. A lot of them, in fact. Yeah. But you I mean, guys I agree missed with that I'll phase. tell you. Fact is, at least 8 out of 10 फिल्म जो रिलीज होती है वो कॉमेडी होती है. और अगर आप वो नहीं करोगे तो सारे एक्टरों को घर बैठना पड़ेगा. Everybody is doing comedy. You like, people like it, the producer is making money. तो लगे पड़े सब. So everybody does comedy. So no, there's no harm in that. It's great fun to do that. What you're saying is कि पुराने ज़माने में एक slot हुआ करता था. Right. ये comedian का slot, ये actor. हाँ, उस ये vamp और ये villain. मतलब do you guys miss that phase कि No, why would will you anybody miss? miss Why will anything? you miss? I'll have a problem when I don't have a job. Somebody don't take me a movie, then I'll have a problem. Otherwise, I don't give a shit. beep? You don't As know what? long,
As long as we are working, we are fine. We are very serious actors. Very serious actors. Yeah. Yes, I can see that. Yeah. Completely. I know. In fact, मैं बहुत डरी हुई हूँ आप लोगों से सवाल I'm glad. पूछने में. It's good. Keep it up. और डराते हैं. Yes, or what? आपको क्या लगा हॉरर पिक्चर का इंटरव्यू चल रहा है? तो डरी सी बैठी. So Arshad, you also started a production house. Yes. But that didn't do too well either. No. Why? Why? What No, went मैं बताता wrong? हूँ. क्या है ना मैं ना भवन was there. मैं एक क्या कहते हैं खराब प्रोड्यूसर हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ. I'm a bad businessman. तो क्या होता है कि इंडल्ज कर रहा हूँ, फिल्म पे खर्चा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये भी लगाओ वो भी लगाओ, समय ना वो सही नहीं होता. Right. सो कहीं पे एक प्रोड्यूसर को जैसे थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए सब कुछ. मैं नहीं कर सकता. तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइम लगे, बट ऐसा नहीं है कि मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा. मैं ज़रूर करूँगा प्रोड्यूस, और भी करूँगा, फिल्में करूँगा. सो बट इट्स हैपेंस. आप करते हैं, यू लूज. द रीज़न एक ये है जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ प्रोड्यूस, वो इसलिए क्योंकि मैंने ना ऑलमोस्ट साल भर तक मैंने फिल्म ही नहीं की थी. मैं इतना घुस गया था प्रोडक्शन में. और मुझे अभी मेरे पास करीब आई हैव टू फिनिश ऑलमोस्ट, आई मीन टच वुड, 8 फिल्म्स आई हैव टू फिनिश विद इन अ स्पैन ऑफ 1 year plus, which is like 1.5 years, which is too much of work. तो ये सब एक बार हो जाए ना मेरे से, फिर मैं थोड़ा गैप लेके then I'll get into production again. I had said during the making of the film कि अर्शद इतना अच्छा प्रोड्यूसर है, इतना अच्छा प्रोड्यूसर है कि तबाह हो जाए. वो बुरा प्रोड्यूसर है. He's not good for his own self. Right. Everybody is very happy. Everybody is comfortable. Everybody is smiling. Everything is good. Comfort You have the levels best are- food. You have Everything is मतलब good. जो चाहिए वो वहाँ पर Treat people है. well. Treat people well. all that. If you want this shot, do it if it's good for the film. It's a good way to go. Right. But it's not good sometimes. practical. It's not practical. Right. It's a bad business move. So it's that. And invariably होता ही है ना, अक्सर जब भी कोई एक्टर प्रोड्यूस करता है तो खूब लुटाता है पैसे, और फिर लुट जाता है. No, not always. No, Chef Ali doesn't. Chef Ali, look at Chef Ali. Chef Ali. Chef Ali spends so much money. Ajay spends. Ajay also goes to town with it. So do you think that actors make good businessmen? Very few. Sunil Shetty does. A lot of actors make But good he has businessmen. it blood में है ना. Business. I think even Shah Rukh is good, isn't he? I think most actors pretty make good businessmen. I think that, and that's There are a few good who are sign. bad. I think even he says he's a bad businessman, but he wouldn't be in a position that he is in if he's not a good businessman. Right. It's about the choices you make. Otherwise, you can let people take advantage of I you. think as a producer, what happens a lot of times. Not is- about being a producer. As an Okay, actor. okay. As an actor, you've got to be a good businessman. You can't say, "Oh, I'm an artist, so Huh, I'll do obviously. Do any rubbish. this and do and- anything." Obviously. You've I got think to that's be. your You've got to, business it's all about business. It's not just money. It's about making the right decisions and picking the right projects with the right people, Right. and making sure that you get paid at the end of the day. And you have got to be understand your market. You have to understand that if this is what you think you are worth. A producer will think you're worth this much. Right. But you actually, if somewhere in between, you've got to find, if you find that in between, then you're a good businessman. True. So maybe the next time, Yeah. hopefully. I mean, something that I just did a little while ago is so relevant to what you're telling me right now. Right. Very relevant. Something here, something here, and something Yeah. The douche. I said, oh, really? Okay, that's okay. That's good. But it's important for an actor to be. You have to conduct your life like a business. True. You've got to allot time to people. You've got to allot your dates in a way that you don't burn out. Absolutely. You've got to be prompt and sharp and juggle your time in such a way that you've got to prepare for the work that you're doing. So it takes a business mind to do it. You can't just say I'm an artist and I'll sit back and my manager. Yeah, films मैं you यही do. फिल्में करूँगा और मैं ऐसे ही. Yeah. Like, I'll tell you, I sometimes have taken a movie purely for people to see another aspect of my acting, Right. which is a business move, I think. Absolutely. It's a complete business move. To be out there. It's like Open another door. you are a product at the end of the day. I hate to put it that way. And how do you spread it around? How much you're willing to sell and how much you're willing to spread. But that's true. Yeah. So, Baman, your son also just made his debut in Student of the Year. I think so, man. I think. Oh, yeah, I yeah. think you get called for interviews so that they I can know talk about that. your son. I think. I'm not so sure he's You going to lost- appreciate that, but. No, it's fine. So, did your son always want to become an actor as well? No. No. My son
was an assistant director in ad films. An ad film assistant director said, when I make my film, जब मेरी पहली picture बनाऊंगा तो will you be my assistant? तो उन्हें हाँ कहा. It turned out to be a Karan Johar Dharma production. So I started working at Dharma. एक में और एक तो was that film शकुन बात्रा. या तो वो assistant director था. एक दिन करण ने पूछा ये लड़का कौन है? तो बोला ये कायोजी ईरानी बमन ईरानी का कौन? So you Boman Irani's son? He didn't want me to tell Karan. That, yeah, okay. Yeah, he wanted to get on his own steam. his own. So he was working there. एक में और एक दो complete हुई. उसके बाद करण ने कहा, "I would like you to audition." He came and tells me that he wants me to audition. I said, "Boss, if you feel confident about doing it, do it." But always the outsider sees it. Father doesn't see it. The outsider sees it. तो उन्होंने audition किया. I don't know if he did a great audition, but Karan said, "I want you in the film." So he said, "क्या करूँ?" I said, "Don't derail your career as a director that you want to be, because there's a hope that you'll become a star." You know what I'm saying? But he did the film, and while the film was after the film was shot, he continued to be an assistant director for a while. He still is an assistant director. Just now he is assisting Karan on the film, which is the film that he's doing short film. Yeah. With Anybody Ranveer. knows? Sorry, yeah, he is assisting Karan at this point of time for Mumbai Talkie. Right. So offers will come. You don't have to take up every offer. That's also good business. You don't have to take everything that comes your way. Absolutely. You don't have to become a star overnight. Do a job well, learn your craft. That's the advice I can give you. Also, coming back to Jolly LLB again. Thank God. Oh, yeah. Okay. If you had to make a compelling case for the audiences to go watch the film, what would it be? I'll sue you if you don't watch the movie. Better still, I will sue you because he is not much of a lawyer. Lawyer, I'm not much of a lawyer. So I will sue you because I really No. feel. He will sue you if you don't watch the film. And come to me, I'll fight your case, which you'll definitely lose. I think that it's a film which has social change involved. It's what the people want to hear. Yeah, very nice. There's a film about hope. It is a film about justice. It's a film about Struggle. righting a wrong struggle, underdog, a good-for-nothing guy, a useless character, a man Again without a getting hope in personal. world. You know, he gets personal. No, in no, the he's name a of, in the Are name of you? acting, no, he goes, the sick guy. And I don't like the jeans he's wearing. I don't like his jacket. I don't like the specs he's wearing. I don't like his hairstyle. Oh, sorry. Okay. The character. That's the character. But if a guy like him can make it in life, Right. Anybody underdog, can. complete, then anybody can. Again, he's got personal. See, I told Yeah. you. But that's the truth of the matter, and that also gives hope to a lot of youngsters. Right. कि you feel कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ, इनके ये बहुत powerful है, मैं हार जाऊँगा. No, if you have truth, Yeah. You fight you for can it fight and you for will it. win. It's an underdog story, great underdog story. Yeah, baby. Didn't mean. Yeah, the under is fine. Yeah, dog is not. Dog is no big deal. Great. I hope it really does well. Thank And you thank very you so much for being with Thank us. you very much. Pleasure. Mega, thank you very much. Thank you. What's Thank her you, name? Megha. Megha, thank you very much.